Hare Krishna everyone. So we are starting for Vrindavan and it's a lovely rainy morning today. I have my friend Vishal Tiwari ji with me today. Vishal ji, just say hi. Hello. And I had a small commitment in the Neem Karoli Babaji's temple in Vrindavan that I'll be bringing some ghee to the Bhandara, which is happening on 18th and 19th of September in Vrindavan. और घी हमने पीछे लोड कर लिया है, which I'll be showing once we reach Vrindavan. And you can see that it is, it is raining very very heavily. You can see from the airdrops here, right? The drops that are coming from high and there from the heavens. So let's begin the journey, and I'll see you soon. Such a beautiful weather. It was raining in Ludhiana, but then we're almost close to Fatehgarh Sahib, and आप यहाँ पे बाबा दीप सिंह जी का बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है. सो थोड़ा सा स्लो करके मैं आपके दर्शन यहाँ पे करवाऊँगा. जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं हल्की सी ब्रेक एक ज़रूर लगाता हूँ, नमस्कार करता हूँ. शक्ति है गुरुओं के अंदर. Just crossed now, and we are going ahead. So it's almost 9:30 in the morning, and we've reached Ambala, and we've stopped for a small break for 2 minutes, and we'll be moving ahead in another maybe 5 minutes, and we are heading towards Kundli. It is almost 200 kilometers from here, and once we reach Kundli, we'll take an EPA, which is Eastern Peripheral Highway, and then we'll reach Mathura Vrindavan. So Tiwari ji is gone to the loo, and I'm waiting for him. I had a cup of tea in the morning, though I'm not a very big fan of tea and coffee. So हमने 2 परांठे पैक करवा लिए थे अचार के साथ. तो जहाँ पर टाइम लगेगा तो वहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा खा लेंगे, घर से ही पैक करवाया हुआ. बट मेरा एम है कि हम ड्राइव थ्रू जाएं, हम कहीं रुके नहीं, सो दैट आई कैन रीच अराउंड 1:30 2 o'clock टू वृंदावन. सो जैसे ही आगे रुकते हैं फिर आपके साथ बात करेंगे. सो वी आर रीचिंग पलवल. पलवल इज़ अराउंड maybe 60 kilometers from here, so that takes approximately an hour from here, and then Vrindavan is an hour ahead from the Palwal as well. So from Palwal another 1 hour will be in Vrindavan. So we're cruising at 120. We are on Eastern Peripheral Highway. This is the speed which is allowed here, and Jai Shri Krishna, right? We are coming. So ladies and gentlemen, we've entered Vrindavan, and you see board up there. Vrindavan. So I'll give you the live darshans of the gate. Maro Vrindavan. Right, here you go. Mero Vrindavan. So we've just entered Vrindavan, and I cannot explain you the feeling, as if we are so close to Krishna. It's a different air, it's a different oxygen here. And I wasn't doing very well.
एंड मैंने अपने आप को बताया ही नहीं कि मैं ठीक नहीं हूँ। अगर मैं बता देता तो शायद नहीं आ पाता। और कभी कभी गुरु भी परीक्षा लेते हैं, और ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है कि हमें अपनी अपनी परीक्षा में हमें जो है कहीं ना कहीं पर पास होना पड़ता है। सो फाइनली वी रीच्ड हियर एंड आई एम डायरेक्टली मूविंग टू बाबा नीम करोली जी's मंदिर, वेयर आई हैड प्रॉमिस्ड टू डोनेट घी। सो मैं बहुत सारा घी भर के लाया हूँ गाड़ी में। भंडारा है बाबा जी का, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू गो स्ट्रेट अवे टू नीम करोली बाबा जी's मंदिर। राइट, ऑलराइट, सी यू गाइस, हरे कृष्णा। About to reach the ashram of Baba Neem Karoli ji. It's like maybe 150 meters from here towards the left. So I'm going to give you the live darshans of this is also called the Parikrama Marg. So you'll see a lot of people doing the Parikrama. You see a lot of people, they're doing the Parikrama. And here we go. Here is Baba Neem Karoli ji's. And that's my Guruji, that's my Babaji. That's my Babaji, and we just no. Take care. Here we go. That's the temple. That's the serenity of this place is so beautiful. It's unimaginably beautiful. Is the ghee that I was talking about. So 5 kgs, 5 kgs, 5 kgs, 5 kgs, 20, 25, 30 and 35 kgs of ghee. So almost 35 kgs of ghee I have brought in for the bhandara, which I promised. उठा लेते हैं, खा लीजिए बाबा। बस, धन्यवाद। बस अपने आप हो जाएगा। बाजी जी ट्रेन उठा के जा रहे हैं, और सतीश जी यहाँ पर जो है प्रबंधक हैं ऑफिस में। इनको हमने वादा किया था, इन्होंने मांगे थे। भैया मैं काम कर रहा हूँ दादा। क्या नाम लिखूं? नवनीत चितकारा। चितकारा, नवनीत चितकारा। 125 कहाँ से? हाँ जी, कहाँ से? लुधियाना से। लुधियाना। सुबह फोन आया था। हाँ जी 35 किलो घी। 35 किलो घी। जैसे ही हमने घी दिया है, बारिश शुरू हो गई है। भोलेनाथ की ब्लेसिंग है इसका मतलब। और मैं फटाफट से आपको मंदिर की तरफ लेके जाऊंगा और दर्शन कराऊंगा। बारिश तेज हो गई है, आई हैव टू रन। रेनिंग एंड जय बाबा नीम करोली जी।
हमारे बाबा जी हैं द लाइव दर्शंस ऑफ नीम करोली बाबा जी। राम 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 राम। नीम करोली बाबा जी की जय। बहुत आत्मिक शांति, बहुत पावरफुल जगह है ये। अगर आप एक बार अपने जीवन में आएंगे तो आप हर बार हर महीने आना चाहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बाबा जी मुझे ऐसी शक्ति देते रहें, ऐसी सेवाएं मैं ज़िंदगी भर इनकी करता रहूँ, ज़िंदगी भर आपकी सेवा करता रहूँ बाबा जी। We've gone to the ISKCON temple. हमने ISKCON में दर्शन कर लिए and we've also given the ghee. We've done Babaji's darshan, which you've already seen in the video, and now we are heading back. हम सीधा वापस जा रहे हैं and we'll be it will take around 7 to 8 hours for us to, hopefully if everything goes well, will take 7 to 8 hours to reach Ludhiana. It is already it's 5 o'clock, 17:07, and we are going to start. So thanks to Tiwari ji, he's been driving all the way. Now I'll drive for some time and then Hare Krishna, and then he'll take over. So chalte hain. Hare Krishna. So guys, Hare Krishna everyone. So it's almost 2 in the night and we've reached. I hope you would have enjoyed this vlog. And commitment is commitment. When you have to go for gurus as a shishya, you should go, no matter how good you are physically, mentally, psychologically. You know, this is to take the real blessings. You should give your 100%. So till then, Hare Krishna and good night to all of you.